Yeah, I know. करवा तो बैठे कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि सुमंगल तिलकं कृत्वा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नवदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, अष्टदेवताभ्यो नमः, अतिथ्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य कार्बरी नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ उमामार्गशीर्ष मासे शुक्लपक्षे अद्य षष्ठ्यां तिथौ अद्यवासरः वासरस्तु शुभयोगे शुभकरणे मुमुन विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं
भार्गवगोत्रे उत्पन्नः पराशरदमे नाम यजमानः। मेरे साथ में बोलो, अहम मम समस्त पितृणाम निरतिशय सानंद उत्तम लोक आवाप्ति आदि कन्यादान आदि कल्प उक्त फल आवाप्तये अनेन वरेण अस्याम कन्यायाम उत्पात ईष्य मान संतत्या द्वादश वरान द्वादश परान पवित्री कर्तुम आत्मनश्च लक्ष्मी नारायण स्वरूपी वर प्रीतये कन्यादान अहम करिष्ये। इसमें छोड़ दीजिए। कन्यार्थिने आगताय अस्मात् साधकाय वराय कन्यादानांगभूतं यथाशक्ति वर पूजनं करिष्ये। निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं करिष्ये। जल अभिमंत्रणादि सकलं कर्म करिष्ये। स्वजेति सिन्दूरवदनो देवो वासरमणिर्वितमसां राशिं नाशयति विघ्नानां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपतिं साङ्गं सपरिवारं सायुधं शरदिकं नारिकेलफले आवाहयामि। महागणपते नमः ध्यायामि। महागणपते नमः आवाहनानि विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। वृद्धिसिद्धिभ्यां नमः हरिर्कृता कुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्ये समर्पयामि। महागणपते नमः पूजार्थे ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि। धूपदीपार्थे अक्षतां समर्पयामि। द्रव्ये समर्पयामि। महागणपते नमः उद्भव पुष्पं समर्पयामि। नैवेद्यार्थे प्रतस्थापित बाफल नैवेद्यं निवेदयामि। प्राणाय नमः दानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः समर्पयामि। मध्ये पानीयं समर्पयामि। त्रपोषणं हस्तमुखवृक्षां समर्पयामि। गृहोदर्शनार्थे चन्दनं समर्पयामि। मुखवासार्थे पुकीफलताम्बूलफलदक्षिणां समर्पयामि। नमो गणपते नमः ब्रह्मदेवते नमस्ते स्तुलंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः समर्पयामि। नमस्करोमि। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्त्रहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पञ्चरत्नमात्रेण योऽन्वहम् प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां दोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरश्च भूतिमभ्युपैति शोचिरात्। नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं गजाननं। कार्यं मे सिद्धिमायान्तु प्रसन्ने द्विधात्री विघ्नानि नाशमायान्तु सर्वाणि गणनायक पूजा महागणपति प्रियताम्। व्यासामाप्यायक सोमो राजाय शोभना स्मृता शतपक्षमां मित्र दात्य कलशार्चने गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। प्रयाजरसम्भूतं घनसारं मनोहरं हृदयानन्दनं दिव्यं चन्दनं प्रक्षिपाम्यहं तन्दुर्वयं मृतजन्मासि विन्दिराजुरेर्पि सौभाग्यसन्त्रिकरे सर्वकार्येषु शोभिना औषधो दुप्रं लक्षोतन्योकृतवल्लभः पञ्चमङ्गैतिख्याता सर्वकर्मसु शोभना फलेन मृतं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् सिद्धं सूक्ष्मं सुखस्पर्शम् ईशानादिप्रियो सदा वासोय सर्वदेवत्यं देहालङ्करणं परं पूर्णपात्रं दिव्यं स्वतुण्डलपूरितं देवता स्थापनायैव कलशे स्थापयाम्यहं पाशास्तं च वर्णं यादसां पतिमीश्वरम् अपां पतिमं वन्दे देवं अग्रवाहनं कलशे वर्णं साङ्गं सपरिवारं सायुधं शताधिकं कलशे वर्णम् आवाहयामि। वरुणाय नमः ध्यायामि। सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पं समर्पयामि। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय शशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते।
नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव तार्थ्य सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णां पूर्णजले समुद्र सरिता कुर्यात् सदा मंगलम् जनं करिष्ये नमः आर्थे गन्धं समर्पयामि चिद्रव्ये समर्पयामि श्रीअंध्रातुर्णीयमानम् अहे बुद्धि यमंत्रम मे गोपाय नमुश्रय श्री विदा विदुः जस्सामान्य जोगुषि साहि श्री रमृता सताम् सहस्रपादा शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः स्नातकाय वराय पूजनेन प्रियतां ईश्वर प्रियतां करिष्ये
ददाम शिवापसंतो सोमनस्यमस्तु चिचिंचास्तु ब्रुवंदो ब्रुवंदो स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवंदो रुद्धिं भवन्तो ब्रुवंदो हिरस्थिति भवन्तो ब्रुवंदो उत्पन्नः समस्त पितॄणां दानादिकल्पोक्त शुभफलावाप्ते अनेन वर्णस्यां कन्यात् उत्पादिशमाण सन्तत्यात् द्वादशापरान् पुरुषांश पवित्रीकर्तुं लक्ष्मी नारायण प्रीतये वरगोत्रमुच्चार्य काश्यप गोत्रे उत्पन्नः नरोत्तमदासदासः प्रपौत्राय शान्तिलालदासः पौत्राय कीर्तिकुमारदासः पुत्राय तथा च युवराजदासः श्रीधर रूपिणे कन्यार्थिने वराय भार्गवस गोत्रे गोत्रोत्पन्नीम् दासः प्रपौत्रीम् आपके पिताजी का दासः पौत्रीं पराशरदासः पुत्रीं प्राजक्तानाम्नीं श्रीरूपिणीं प्रजापति दैवत्यां प्रजोत्पादनार्थं धर्मचारणार्थं च भार्यात्वेन तुभ्यमहं संप्रददे न मम। इसमें से इस कलश से थोड़ा सा पानी ये अंगूठी के ऊपर गिर जाएगा, थोड़ा आगे कर दो। शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु, पेंट कर दो ना, शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शांति पुष्टि तुष्टि, सिर्फ पानी नीचे आएगा। सोमा शांति पुष्टि तुष्टि शास्तु पुण्यं भवन्तु ब्रवन्तु स्वस्तिं भवन्तु ब्रवन्तु रुद्धिं भवन्तु ब्रवन्तु श्रीरस्वति भवन्तु। भार्गवस गोत्रे उत्पन्नः पराशरदवे नाम यजमानः अहं बोलिए मम बोलिए समस्त पितॄणां निर्दिशय सानन्तु तुमलोकावाप्त्यादि कन्यादानादिकल्पोक्त शुभफलावाप्ते अनेन वर्णस्यां कन्यात् उत्पादिशमाण सन्तत्यात् द्वादशपरान् पुरुषांश पवित्रीकर्तुम् आत्मनः श्री लक्ष्मीनारायण प्रीतये काश्यप गोत्रोत्पन्नाय कीर्तिकुमारदासः पुत्राय तथा च युवराजदासः श्रीधर रूपिणे कन्यार्थिने वराय भार्गव गोत्रोत्पन्नीं पराशर नामः मम बोलो प्राजक्तानाम्नीं पुत्रीं श्रीरूपिणीं प्रजापति दैवत्यां पानी डाल दो, प्रजापति दैवत्यां प्रजोत्पादनार्थं थोड़ा आगे भार्यात्वेन तुभ्यमहं संप्रददे न मम प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शान्ति पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु पुण्यहं भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो रुद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो श्रीरस्वति भवन्तु। भार्गव गोत्रे उत्पन्नः पराशरदवे नाम यजमानः अहं बोलिए मम बोलिए समस्त पितॄणां निर्दिशय सानन्दु तुमलोकावाप्त्यादि कन्यादानादिकल्पोक्त शुभफलावाप्ते अनेन वर्णस्यां कन्यात् उत्पादिशमाण सन्तत्या द्वादशपरान् पुरुषांश पवित्रीकर्तुम् आत्मनः श्री लक्ष्मीनारायण प्रीतये काश्यप गोत्रोत्पन्नाय कीर्तिकुमारदासः पुत्राय युवराजदासः श्रीधर रूपिणे कन्यार्थिने वराय भार्गव गोत्रोत्पन्नीं पराशरदासः मम बोलिए प्राजक्तानाम्नीं पुत्रीं श्रीरूपिणीं प्रजापति दैवत्यां प्रजोत्पादनार्थं सहधर्मचरणार्थं च भार्यात्वेन और एक बार पानी डाल लो तुभ्यमहं संप्रददे न, थोड़ा आगे ले लो, थोड़ा कलश आगे लो, बस बस बस। ये दोनों अंगूठियां इनके हाथ में छोड़ दो, हाँ दोनों सुरास्वाम विष्णु ब्रह्म विष्णु महेश्वराः वासुदेव जगन्नाथ तथा संघर्षणो विभो प्रद्युम्न शान्द्रदर्श भवन्तु विजयायते अखंड लोकधर भगवान् मोवै निरति सदा वरुण पवन शिवधनाध्यक्षदा शिवाः ब्रह्मणा सहिता सर्वे दिक्पालाः पान्तु ते सदा कीर्तिर्लक्ष्मीर्तिर्मेधा पुटिश्रदा क्रियामती बुद्धिर्लज्जा उपशान्ति कान्तिस्तुष्टिश्च मात्राः एतास्मामभिषिञ्जन्तु देवपत्न्यः समागतादित्य चन्द्रमा भौम बुध जीव सितार्कजाः ग्रहस्वामभिषिञ्जन्तु राहु केतु शत्रपिताः देवदानव गन्धर्वा यक्ष राक्षसबन्धकाः ऋषयो मनयोगावो देवमातरैव च देवपत्न्यन्तुर्मानागा दैत्याशाप्सरसाङ्गणाः अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च औषधानि च रत्नानि कारस्यावयवाश्रये सरितसागराशये लास्तीर्थानि च रथानदाः एते स्वामभिषिञ्जन्तु सर्वकामा कन्यां प्रदास्यामि प्रणाम कारणाय च Bro, space please. नाति चरामि No photo. अर्थे च नाति चरामि कामे च नाति चरामि। Can you come back? Little while. Can you come back?
No, this tripod. You have zoom now. Don't stop, just come back. Why does the frame आएगा? No. Keep this tripod back. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वनाथ मुकुंद विष्णु त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् हर नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव हाँ. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वनाथ मुकुंद विष्णु भगवन् नमस्ते नर्य प्रजां मे गोपायामृतत्वाय जीवसे जातांजनिष्यमाणांच अमृते सत्ये प्रतिष्ठितां सुप्रतिष्ठितमस्तु सुमुहूर्तमस्तु नवऱ्याच्या बाजूची करोली येऊन गांठवल बांधून घ्या Yuvraj and Prajakta, namaste. I'll just take maximum 5 to 10 minutes just to explain what we have done. I know both of you are from different traditions. We are from the third one, you can say. But we'll just try to see what we can just in 10 minutes I can tell you. I'm using English as a language just for understanding. Otherwise, with God's blessing, I can speak 5 languages. I don't have any problem. Whichever is comfortable, I can speak. मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग हिंदी वाले हैं, मराठी वाले भी तो हार्डली है. We started this ceremony day before yesterday. आपके घर में जो हुआ वो गणेश जी का पूजन हुआ. हम गणेश जी का पूजन करते हैं ताकि ये सब जो कार्यक्रम है तो निर्विघ्नतया संपन्न हो जाए. We can plan the things, but execution comes only with His blessings. You can plan 99%, but 1% जो blessing है, sometimes it supersedes your 99% of hard work. So just to seek blessings, भगवान की कृपा और दया के लिए हमने गणेश जी का पूजन किया. गणेश जी का जिस दिन पूजन हुआ उस दिन पुण्याहवाचन हुआ. Only if you feel कि it has been a very auspicious day for both the families, it doesn't happen. So we also pray to God. हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों के लिए ये दिन जो है बहुत पुण्याहकारक हो जाए. इसीलिए उसको पुण्याहवाचन बोलते हैं. वो भी उस दिन हुआ. नवग्रह की पूजा हुई. एक पितरों की ये पूजा होती है जिसको हम नांदी कहते हैं. शुभ दिन श्राद्ध नहीं होता है, लेकिन आज भी उनके घर में आज या कल जो हुआ उसको नांदी कहते हैं. We just seek blessings from all the ancestors because they are also happy. A good event is happening in our family, but they can't come. ना ही उनको हम कुछ देना चाहिए, ना ही वो हमसे कुछ मांग, बट सिर्फ उनकी याद करते हैं, जिसको नांदी कहते हैं. ये विवाह के पहले दिन का कार्यक्रम हुआ जिसको हम विवाह पूर्व दिन कृत्यम कहते हैं. इसके बाद में आज जो शुरू हुआ, बारात शुरू होती है. जब बारात यहाँ तक पहुंचती है
स्पेशली दुल्हन की माँ और पूरा दुल्हन का परिवार दूल्हे का स्वागत करते हैं विथ हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हेन द प्रोसेशन अराइव्स, नजर उतारते हैं और दूल्हे को मंडप तक लेके आते हैं. देन ही वेट्स फॉर द ब्राइड टू कम. कंपैरेटिवली यू केम क्वाइट अर्ली टुडे, अदरवाइज इट इज मिनिमम यू कैन से अच्छा, अदरवाइज इट इज नॉर्मली 1 घंटे भर का पीरियड होता है. एंड वी टेल इट अदर वे अराउंड, इट इज एन बिगिनिंग ऑफ सस्टेनेंस फॉर हिम, सो ही हैज टू गेट इम्यून टू इट. तो इसके बाद में दोनों एक दूसरे को देख के खड़े होते हैं. पूर्वराशो प्रत्यंग मुखम वरम, दोनों का एक एक पोजीशन रहता है और हम मंगल अष्टक बोलते हैं. मंगल अष्टक का अर्थ यही होता है, पूरे देव देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ. इसके बाद में जो अंतरपाठ है वो नीचे उतारते हैं और आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनते हैं. यू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज ईच अदर विद अटमोस्ट लव, जिसको हम वरमाला कहते हैं. उसके बाद में दुल्हन के माँ और पिताजी फिर से आगे वाला प्रयोग शुरू करते हैं, जिसमें फिर से एक छोटा सा गणेश जी का पूजन होता है. उसके बाद में आपने प्राजक्ता देखा कि वो दोनों आप दोनों की पूजा कर रहे थे. इनफैक्ट वी बिलीव इन अवर कल्चर दिस डे हैज कम इनटू योर लाइफ नॉट बिकॉज हाउ मच यू आर एजुकेटेड, विच फील्ड यू आर वर्किंग, हाउ मच यू आर अर्निंग, बट इमटेरियल ऑफ ऑल द सर्कमस्टेंसेस. वी स्ट्रांगली बिलीव आज का दिन आपकी जिंदगी में आता है ओनली बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स. सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देम both families you are able to see this day. But आज का एक दिन ऐसा है जिस दिन माँ और पिताजी बच्चों की पूजा करते हैं. आपकी पूजा माँ लक्ष्मी के समान होती है and he is worship in place of God Vishnu. बालाजी के समान पूजा होती है. If you ask me in 1 or 2 lines what is the significance of this entire ritual, it is very simple. आज के दिन ही आपकी पूजा नहीं होती है, but आज के दिन पूजा होने के बाद throughout the life you are supposed to behave like Lakshmi and Vishnu is the significance of this wedding ritual. Little difficult to digest, but you can always try. It is not impossible. All of us with God's blessings are now, everything अपने पास है. Only the thing we have to just change our way of thinking. इसको मधुपर्क पूजा कहते हैं. आज के एक ही दिन माँ और पिताजी बच्चों की पूजा करेंगे, but otherwise throughout the life we have to see how we can keep them happy. That has to be on top priority. It is because, again I am repeating, it is only because of them we are able to see this day. मधुपर्क पूजा हुई. उसके बाद में जो हुआ उसको कन्यादान कहते हैं. While doing this Kanyadan, the bridal parents are telling the groom that whatever they could do for their daughter, they have done, and they are entrusting their daughter to you, and they are requesting to take care of her in the best possible way. In fact, there is a small literature wherein what are the feelings of the bridal parents. In fact, this is to be read by Prajakta's father, but paper is big, don't worry, it will take just 1 minute, and I will finish on time. जो मुझे वक्त दिया है उसी में खत्म हो जाएगा. प्राशर जी, एक्चुअली आपने पढ़ना है, बट आप सुनो, बिकॉज आई नो इट इज वेरी सेंटिमेंटल, सो एंड यू विल बी एबल, नॉर्मली नोबडी एबल टू कंटिन्यू इट. We thought we would start by addressing Yuvraj as the new family of our daughter, but we think it would be inappropriate because now that she is married, you are the family for her. Believers, we don't have a problem with that. We in fact want our daughter to have you as her priority now. It's time for us to take a back seat in her life. Yuvraj, we would happily accept it, but would surely request one thing. Please keep our daughter very happy. We are more than sure that you will keep her very happy. She will perhaps be happier than what she used to be over here. But like all parents, we are obsessed over our daughter's happiness, which is making us to say over and over again, please keep her happy. Prajakta never was and never will be a burden for us. She is in fact the reason why we breathe and smile. We are getting her married because this is what the law of nature demands. We are helpless in the face of our culture and therefore sending her to your home. She was the happiness of our home and now will light up your home. We are giving away our world to you. Make sure that it remains beautiful with you. We are giving away our princess to you. Yuvraj, please make sure that she stays as a queen with you. With God's blessings, we have raised her with lots and lots of love and our sweat and blood. And today she is wonderfully perfect. For all the care, love, beauty and warmth our daughter will bring into your life, we just want her happiness in return. Please see that she is always happy. If at times you think that our daughter has said or done something wrong, feel free to scold her, but always handle her with love. If at times she feels low, be with her. She just needs a little bit of your attention. If at times she feels sick, show her some care. It's the medicine that might work best for her. If at times she fails to fulfill a responsibility, feel free to chastise her, but empathize with her. She is also learning. Do understand her and please keep her happy. As parents, we don't mind if we don't get her to see her for days, months or weeks together. We don't mind even if we are not able to talk to her on a daily basis. We would be more than happy even if she doesn't remember us too much, because our only motive in life has been our daughter's happiness, which is now in your hands. We humbly request you to see that she is always happy.
Dear son-in-law Yuvraj, these words may not mean much to you now, but if you're lucky enough to father a daughter someday soon, you'll appreciate them better when you'll fight every beat of your heart shouting, please keep her happy. Yuvraj, I ask you to just chant 3 words, Nati Charami. त्याचा अर्थ इतकोच असा की जसे हांवें तांकां सांगलें तशें तुकाय तितकेंच आसा. आई वडिलांमुळेच तूं आसा अशी प्रत्येकान आमी जर धारणा केली जाल्यार खंयच आमी वचपाची गरज ना. आवर 90% ऑफ लायफ विल बी मोर सक्सेसफूल अँड मोर कम्फर्टेबल. सो हियर तूंय ताका सांगता की आज आई वडिलांमुळे जे आपूण आसा, ज्या आई वडिलां आपूण देवा समोर मानता, देवा समान मानता, त्यांच्या समक्ष तुमकां शब्द दिता की तुम्ही कांयच चिंता करू नका. जितके बरे पद्धतीन जातले तितके बरे पद्धतीन आपूण तुमकां सांगता. पराशर जी वो कहते हैं आपको जो उनके पेरेंट्स ने उन्होंने उनको दिया है. नॉर्मली अपने संस्कृति में माँ और पिताजी के जैसा दूसरा दैवत ही नहीं है. न मातु परदैवतम, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द पेरेंट्स. अपने माँ और पिताजी के सामने वो आपको वचन देते हैं. जितना उन्होंने उनको सिखाया है उससे भी ज्यादा वो हर दिन कोशिश करेंगे कि प्राजक्ता हर दिन आपके घर में से भी ज्यादा सुखी अपने घर में रहे. ये आपको वो शब्द देते हैं. एक बार भगवान का नाम ले लो. हर नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव. विशिष्टायाम शुभ गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
अक्षतैरावाह्य आचार्यं समस्तव्यार्थिनां परमेश्वराय इमाम प्रेतो मुंजातु नमुत स्वाहा। एक एक मुट्ठी डाल दो, एक एक मुट्ठी डाल दो, तीनों डाल दिया। अर्यमणेग्नये नमो नमः। अर्यमणेग्नय इदं नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शरदं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः रौद्राय नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सततं नमः। कल्याण्ये प्रदामृत्यै सिद्धिकूर्मे नमो नमः। नैऋत्ये भूप्रदां लक्ष्मे सर्वाण्ये ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये यात्रे तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्ये कृत्ये नमो नमः। वरुणाग्निसृष्टुभ विवाह प्रधानाज्यो मे विनियोगः। ओम वरुणन्नुदेवं कन्याम् अग्निमयक्षदा ते नमो नमः। वरुणाग्नय इदं नमः।
नित्याये गौरी धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः कल्याण्ये प्रणतामृद्धे सन्ध्ये कूर्मे नमो नमः नैऋते भूभृतां लक्ष्मी शर्वाण्ये ते नमो नमः हाराये सर्वकारिण्ये याते तथैव कृष्णाये धूम्राये सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्राये नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्यो पुष्पाग्निस्तुषुभ विवाह प्रदानादाचो मे विनियोगः भूष्णे अग्नय इदन्न मम गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते भगवति हे सिद्धिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते त्रिजवा विवाह प्रदानाज्यो मे विनियोगः प्रजापते नद्वदेतां जन्यो विश्वा जाता निपतिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नोऽस्तु वयं स्यामपतयोरयीणां स्वाहा प्रजापते दन्न मम मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। इसको हम लाजा होम कहते हैं। दिस इज बेसिकली अ कंटिन्यूएशन ऑफ लिंक्स बिटवीन बोथ द फैमिलीज। आप अपने बहन को कहते हैं कि शादी होने के बाद भी द क्वांटम ऑफ लव टुवर्ड्स हर विल नेवर चेंज। इट माइट इंक्रीज बट डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस। एट द सेम टाइम यू ऑल आर टेलिंग युवराज कि यू हैव अलाउड योर सिस्टर टू मैरी हिम। दैट डजंट मीन दैट ही इज फ्री टू डू एनीथिंग। यू आर ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ देम। युवराज तांकां कितें तरी तांकांय तिगांकय दिवजां कितें तरी कितेंय दी तूं दिलें की जालें आनी न दिल्यार रे आमकां कांय ना। आमी सांगलें की आमचें काम जालें। एक्चुअली उन्होंने कुछ देना है बट ही इज टेलिंग यू ही विल गिव इट लेटर ऑन। यू रिमेंबर इट। आप नीचे जा सकते हैं। आता एकट्याकडे दी। मिनट कट करके ले लो आप तीनों। आप आगे आएंगे। एनवलप कट कर म्हटलं ते काही इतक्यान सारखे पावसले। त्यांनाही दे थोडी फुलं। आप खड़े होके ब्लेस कर दो उनको। तुम्ही घ्या यहाँ पुन्हा। नहीं अभी अभी जब भी फेरा चालू है आपके पास आएंगे वो। जब भी आपके पास आएंगे उनको ब्लेस कर देना। आप वहीं के खड़े रहो। आप वहीं पे शुरू करो। ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विधारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते अयि सुमन 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 सुमनोहर कांति युते श्रित रजनी 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 कर वक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते जय जय महिषासुर कपर्दिनि शैलसुते। बस मांगल्य तंतु नानेन मम
जीवन असेच म्हटले जीवन हेतुनाम कंठे बध्नामी सुभगे साजीव शरदः शतम. आई वडिलांना स्मरण कर, त्यांचे एकदा नमस्कार कर, महालक्ष्मीचे स्मरण कर, सगळ्या घरांच्या देवदेवतांची पूजा जाता, वाढ वडिलांचे एकदा स्मरण कर आणि देवाचे नाव घे आणि तिच्या गळ्यात घाल. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. जगदंब उदयोस्तु उदयोस्तु उदयोस्तु. मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. या देवी सर्व भूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. महालक्ष्मीचे स्मरण कर, सगळ्या आई वडिलांचे स्मरण कर आणि तिचे भांगा मित्र तो सिंदूर घालपाचो. जय जगदंब उदयोस्तु उदयोस्तु उदयोस्तु. शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते. सूर्या सावित्र्याय नमो नमः. सूर्या सावित्र्याय इदं नमः. सूर्या सावित्र्याय नमो नमः. सूर्या सावित्र्याय इदं नमः. सूर्या सावित्र्याय नमो नमः. सूर्या सावित्र्याय इदं नमः. प्रजापतये नमो नमः. प्रजापतये इदं नमः. एक बार प्रणाम कर दो. अग्नि नारायणाय नमः ध्यायामि. सकल पूजार्थे नमस्कारान् समर्पयामि. धूप दीपो परिकल्पयामि. नैवेद्यार्थे आज्य नैवेद्यं निवेदयामि. प्राणाय नमः. अपानाय नमः. व्यानाय नमः. उदानाय नमः. समानाय नमः. ब्रह्मणे नमः. नैवेद्यं मध्ये प्रदर्शनार्थे पानीयम् उत्तरापुषणमस्तं घोप्रक्षारं समर्पयामि. समस्त शेषोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि. विभूतिं धारयित्वा मधले बोटा ओम मधले बोटा ओम नमः शिवाय म्हणा. परत घे. किमतीच्या कपला लावपाचे. both of you will have to just repeat with me. अग्नये नमः. स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि मे हव्य वाहन अच्युताय अनंताय गोविंदाय अच्युताय अनंताय गोविंदाय अच्युताय अनंताय गोविंदाय नमो नमः. इसको सप्तपदी कहते हैं. These are basically both of you walk 7 steps together. We believe that if you walk 7 steps together, you become each other's best friend. But यहाँ पे not only friendship, but you just promise few things to each other. Just keep your right leg on that first supari. तू तुझा हात तुझ्या हाताने धर. The couple taking 7 steps, symbolizing the constant companion throughout the journey of life. Let us be not in one in mind,
but one in everything. In the first step, both of you promise each other that let us be together in attaining the livelihood, sharing, sustenance, respect each other. The definition of love in our culture is very simple. If you look at our parents, I think they themselves are more than the definition. The person to be loved absolutely doesn't deserve to be loved. But unconditionally you have to love him or her. Actually, that is the actual definition of love. And if you are able to, I think, follow even 10% of it, I think you will be successful. It's the ability to understand. In a married life, it's not a question of whose mistake. It's a question of whole life. एकच देवान सगळ्या सारखें दिलां ते म्हणजे वेळ. So don't waste your time fighting with each other. Invest each and every moment in making your life and life of both the families very happy. Go to the second step. In the second step, let us be together attaining the health, strength, empowerment and always care for each other. हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तो हमें दिक्कत हो जाती है. सो आफ्टर मैरिज अपनी संस्कृति कहती है किसी से एक्सपेक्ट ही करना छोड़ दो. इफ पॉसिबल ट्राई टू गिव, एंड मनी इज द लास्ट थिंग यू कैन गिव. डोंट बी अंडर द इंप्रेशन दैट यू हैव टू गिव मनी. मनी, पैसे देना सबसे आसान चीज है, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. हेल्प, ह्यूमन वैल्यूज, लव, स्माइल, दिस ऑल थिंग्स makes lot of sense. सुबह उठते ही how is your face, that makes your entire day. So don't be under the impression देना means पैसे देना इससे अच्छी और आसान बात और कुछ नहीं है. बाकी सब चीजें इतनी दिक्कत है, but see that you try to replace get with give. Go to the third one. In the third step, let us be together attaining the prosperity, wealth, harmonious life and always be patient with each other. See, if we call ourselves to be educated, then we should have creative ways to correct each other. Like animals, we should not bark at each other. If really we claim that we are educated, then if it is only a bookish knowledge, then I don't think. There is a lot of difference between education and being cultured. So see that you are cultured. And skhalanam manusho dharmaha, galti karna ye manushya ka swabhav hai. But how to improve it in a very creative way, it is a knack. Try to learn it and try to see that. Don't just waste your time in blame game. Try to correct each other in the right way and be happy. Go to the fourth one. In the fourth step, let us be together in attaining the growth, happiness and take care of each other's health. I think COVID has already taught us how important is health. So I need not elaborate it. आरोग्यम धन संपदा, कम से कम 10,000 साल पहले अपने ऋषि मुनि लिखे रखा है. आरोग्यम धन संपदा. There is nothing more than health. So in the fourth step, both of you promise each other that whenever the question of number of priorities will come, always you will keep health on your priority and not the wealth. Absolutely. I think he doesn't agree. Okay. Go to the fifth one. In the fifth step, let us be together in attaining the progeny and be honest and faithful to each other. I'll tell you a simple thing. Love will never guarantee you happiness. Happiness will definitely guarantee you love. And how do you have happiness in the family? There is no any shortcut method for that. Only blessings. आशीर्वाद जो है वही घर में सुख और शांति ला सकते हैं. So whenever you are earning money, immaterial of which profession you are, it may be any good profession, see that along with money you earn blessings. Blessings will definitely guarantee you happiness, and happiness will guarantee you love. Love will never guarantee you happiness. I love you to such an extent that will never keep you happy. If you say I am very happy, that will definitely create a love in you. So remember that happiness is an essential. At home, don't expect ISO standards. Don't bring a professional home, because I think the world is moving so fast that maybe 25 years from today, I think only a husband and wife are staying together. We will be called as a joint family. इतनी हमने प्रगति की है. So just think about all these things. In the sixth step, let us be together attaining the pleasure in all the seasons and be together in sorrow and happiness. Every time Prajakta you were just taking around, मैं आपको बता रहा था कि ये जो अश्मा है, संस्कृत में अश्मा का रॉक का मतलब अश्मा है. अश्मा means rock. A rock is always fastened to the earth. आपने नीचे देखा होगा जो सब पत्थर है वैसे ही एक ही जगह पे है. यदि बारिश आ गई तो पत्थर ऐसा नहीं सोचते हैं कि अभी बहुत बारिश है या बहुत गर्मी है, हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं. सेम वे getting married is an invitation to the problems. But remember one thing, problems are always temporary. We try to make them permanent. Try to see that like rock you are firm with each other. Immaterial of the circumstances, both of you assure each other that let us be rock like, firm in each other.
It is not a corporate. Today you are husband and wife. After 50 years, you will be also husband and wife only. कि based on your performance, you will be elevated to the role of some vice president. ये कहीं नहीं होगा. This is a very simple life. Try to be as simple as you can, and that will keep you happy. Go to the last. Let us be together in attaining a deep commune, salvation, travel the journey of life with harmony. ये जो विवाह संस्कार है, ये एक संस्कार है, ये कोई करार नहीं है. It is not a contract. Contract is void or voidable if the compliances of the contract are not complied. Here, once you are married, immaterial of the circumstances, both of you promise each other that let us be together. Last जो है, इसको सखा कहा है. सखा is, there are some Sanskrit words, इसके लिए कोई meaning ही नहीं मिल रहा है. उसका अर्थ यही है, don't hide anything from each other from today. That is most important for a happy married life. You can't say कि I am earning, so let me do what I want. Then it is not a married life. Then it is better that you are a bachelor only. You don't get married. Once you marry, then it cannot happen like that. It has to be, everything has to be in consultation and consent of each other. And that consent has to be with love. It cannot be any forcible consent. Sakha kaha hai. Minimum requirements and maximum adjustments are the two must for a very happy married life. Very important two lines. Remember this. Life is not about finding the right person. If you want to find the right person, and if you take a torch and find out for 100 years, I don't think that you will get a right person. It is creating the right relationship once you are together. Life is not about finding a right person. Life is creating the right relationship once you are together. It is not important that how much you care each other today. It is very important that how much you care each other till the last is very important. आप दोनों खडे हो जाओ. तुम्ही दोघांनी जण उठा आणि युवराजाची आई आणि बाबा हांगा येऊन बसा. आप दोनों खड़े हो जाएंगे. तुम्ही युवराजाची आई आणि बाबा येऊन हांगा बसा. प्राप्त वर्ष एक मिनिट हा राजकता एक मिनिट. आपकी ड्रेस This is normally to be explained to both of you, but as everybody is educated, I think that will be better that if you read it for each other. This promises has to come from both of you. So one by one you will read it. One you will read and give the mic to him, and then he will read the first and give it to you back. I shall begin a new life with my husband and truthfully be his soulmate. From today, my wife shall be my soulmate, and together we begin our journey into life's creation. I vow to care for her as I care for myself. I shall accept his family and relatives as my own and shall serve them with courtesy and respect. I shall happily bestow upon her the honor of being my homemaker and shall value her opinions. I should do away with laziness, be hardworking and productive, thus contributing to my level best in the progress of my husband. I accept my better half with all her virtues and flaws, her imperfections arising out of ignorance without expressing any dissatisfaction, and with love and affection shall build intimacy while improving and accepting her. I shall faithfully perform all my duties with devotion and commitment. I shall keep my promise to be loyal and truthful and be a true good friend, conferring true love. I shall always be an advocate of cleanliness, service and courteousness. I shall get rid of jealousy and possessive and be source of happiness around everyone. I shall be loyal to my wife in thought and behavior. I
shall not be a spendthrift and shall stand by my husband even the course of a financial crisis. I shall carry on the household financial matters in consultation and consent of my wife. Keeping apart all indifferences, I shall serve my husband devotedly and dutifully, shall be productive and never insult him. With complete honesty, I shall strive for the happiness, progress, and safety of my wife to the best of my ability. With humility and simplicity, I shall be devoted and committed to all those who are devout in his life. I shall resolve any indifferences, any misunderstanding calmly, and shall not disgrace her. I vouch to be dedicated in inculcating the necessary values and morals in life to be important to my family and make sure that what God has put together in our family, no man shall divide. I shall continue my cooperation and fulfill responsibilities, even if my wife is unable to perform or disinclined towards her duties. अब दोनों खड़े हो जाएंगे। आप दोनों असं नाही तो तुझ्या आई बाबाच्या फाटल्यानं उचलू कर। में ले लो, अपने बिटिया को लेके यहाँ तक आ जाओ आप दोनों। प्राप्त वर्षादिमाम तू मरे युवराज वासने तुझ्या आई बाबाच्या फाटल्यानं राहो। प्राप्त वर्षादिमाम कन्यां पुत्रवत पालिता मया इदानीं तव पुत्राय दत्ता स्नेहेन पाल्यताम्। प्राप्त वर्षादिमाम कन्यां पुत्रवत पालिता मया इदानीं तव पुत्र यू सिट ऑन हर लैप। प्राप्त वर्षादिमाम कन्यां पुत्रवत पालिता मया अदिति स्वीट्स सगो अदिति हाय ये छोड़ दो हाथ में छोड़ दो। और आप दोनों युवराज के माँ पिताजी को प्रणाम करके वहीं से खड़े हो जाए। तुम्ही त्यांना नमस्कार करा। प्राप्त वर्षादिमाम कन्यां पुत्रवत पालिता मया इदानीं तव पुत्राय दत्ता स्नेहेन पाल्यताम्। तुमका कोकणीतूच सांगता, माझे वय बी तितके ना तुमका सांगासारखे, पण प्रेम असा तितकेच सांगता। ओकलेचे जे आवय बाप आसा ते तुमका सांगता, लहानापासून वडपर्यंत तेका वाडयलें। तुमचे रितीरिवाज निराळे, त्यांचे रितीरिवाज निराळे, सगळें तेका कळटलें अशें ना। पण तुमकां जर एक धूव आशिल्ली जाल्यार तुम्ही धुवे कशें करता आशिल्ले तितक्याच प्रेमान त्याचो सांभाळ करा। खूप कठीण तें, खूप मोठें काम, पूण इतकें प्रेमान करा की ती तिच्या आई वडिलां विसरून तुमकांच आई वडील अशें करूं नये म्हणून। पैसे हांवें तुमकां सांगलें तशें पैसे वस्तू आनी कशेंच सूख मेळना। हांव फक्त हेजे खातीर उलयना, पूण तितकेंच तें तुमकां सांगता। सो आज पर्यंत कितेंय जर चुका घडलेल्यो आसत सगळे माफ करा आणि अतिशय आनंदान आपले भुरग्या प्रमाण तेका वाडया अशें ती तुका हात जोडून सांगता। क्या बताया मैंने उनको कि आज तक जो कुछ किया है आपने अपनी बिटिया के लिए, जो आपको भगवान ने दिया है वो आपने सब कुछ किया है। और शादी उन दोनों की हुई है, फिर भी आप दोनों उनके माँ पिताजी से प्रार्थना करते हैं पूरे सम्मान श्रद्धा एवं आदर से, और उनको विनती करते हैं कि जितना हो सके उतने ही प्यार से अपनी बिटिया को आपकी बेटी की तरह ही स्वीकारना, उसको बहुमत बनाना, ये आप उनसे प्रार्थना करते हैं। while organizing this event or maybe in the past if there is any bitterness, request them to keep everything in Goa only, यहाँ पे, और happily accept her as daughter, ऐसा आप दोनों उनको कहते हैं। तुम्ही एकदा त्यांना सांगा काही चिंता करू नका, महालक्ष्मीचे स्मरण करा, तुमच्या आई वडिलांचे स्मरण करा। युवराज असो आई वडिला एक नमस्कार कर। आप दोनों आके पहले उन दोनों को चरण स्पर्श कर दो। तो लाडू ओढे ना पुष्ट देतो ओढे बाय तो दोर आनंद वर अजून युवराज असो यो आणि त्यांचे नमस्कार करे। प्राप्त वर्षात एक मिनिट हे घ्या। आप चरण स्पर्श कर लो एक बार। प्राजक्ता
पाय पड मरे बरोबर प्राप्त वर्षादिमां कन्यां पुत्रवत पालितामया इदानीं तव पुत्र दत्ता स्नेहेन पाल्यताम. अपने माँ पिताजी को चरण स्पर्श करें. तुम्ही असा त्यांच्यानं सगळे एक आशीर्वाद दिया त्यांना. हरी ओम शतंजीव शरदो वर्धमान शतम हे मंतान शतमो वसंतान शतमिंद्राग्ने सविता बृहस्पति शतायुषा विषेम पुनर्दो आहार शन्त्वा विदन्त्वा पुनरागा पुनर्नवा सर्वांग सर्वन्ते चक्षु सर्वमायुष्यते विदम् सर्वस्याप्ते सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति. स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सन्तो दाम्पत्यो अभिच्छिन्ना प्रीतिरस्तु. जगदम्बा महालक्ष्मी देवता सुप्रसन्ना वरदा भवतु. मृत्युंजय भवानी शंकर सांब सदाशिव देवता सुप्रसन्ना वरदा भवतु. दाम्पत्यो अभिच्छिन्ना प्रीतिरस्तु. पर रामचंद्र की जय. पवन सुत हनुमान की जय. बोलो रे भाई सब संतन की जय. लग्नाचा सगळं कार्यक्रम झालो. फुडलो कितें तो कार्यक्रम तुम्ही करा. थोडेशे गुजराती आणि हे अशें आशिल्ल्या कारणान कितें शक्य आसा तें केलां. श्रीराम. काही वर